Okay. Today we will be covering some of the topics of Unit 3 and your Unit 4. Okay. In the last class, in the last to last class, we discussed about the WTO, which is one of the economic organization. Today, again, we will discuss about WTO, GATT, IMF, and the World Bank. And after that, we'll discuss your foreign exchange markets. So, what is a GATT? GATT is a General Agreement on Tariff and Trade. Its foundation was laid in Havana, Qatar. There was an international conference on trade and employment which was held in Havana after a Second World War in 1947 to 1948. And the purpose for the conference was to establish an international trade organization which was signed by 53 nations. But this ITO was never formed. But on the other hand, 23 nations agreed to, on the other hand, 23 nations were agreed to form a new association, which is a GATT, to have an extensive trade negotiation for the trade concession at Geneva, which were incorporated in a general agreement on tariffs and trade. When a few more nations signed the agreement on 30th 1947, GATT came into the force in January 1st, 1948. So this is the brief history how the GATT came into the picture. Now there is 96 government known as a contracting parties which who signed this multilateral treaty that led to the formation of GATT. GATT is neither an organization, it is not an organization nor a court of justice, but it is just a multilateral treaty that covers 80% of the world trade. So क्या पर्पस था गैट को बनाने का? गैट को पर्पस बनाने का कि जो भी ट्रेड बैरियर्स है कंट्रीज के बीच में, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, उसको कम करने का पर्पस था, सो दैट जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का वो स्मूथली हो पाए. ठीक है. Moving on, it was a permanent international organization having a permanent council of representatives with its headquarters situated at Geneva. It was a decision-making body with a code of conduct for the international trade and a mechanism sought by the nations to liberate trade from the problem of extensive pattern of trade. Just now I have explained you that what is the purpose of formation of GATT? It is to liberate a trade and to reduce the trade barriers between the nations. So these were the four objectives with which the GATT was formed. First is to follow the principle of unconditional most favored nations. What does this principle talk about? That कि अगर मेरी कंट्री ए ने, ठीक है, XYZ कंट्रीज के साथ कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स अग्री कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रेड कंडीशंस अग्री कर रही हैं which are favorable to them. So वही same condition it will follow with the other condition, other member nations. ठीक है, that was the principle of unconditional most favored nation. To carry on a trade on the principle of non-discrimination, reciprocity, and the transparency. Therefore, क्या GATT का second objective था कि there would be a no discrimination between the countries in terms of trade, and there will be the transparency in trade. Third is to grant a protection to domestic industry from the tariffs only. ठीक है. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस दैट देयर आर नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे कंट्री सैंक्शंस लगा देती है और या फिर बैन कर देती है पूरे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो उसको ना करके कंट्री विल ओनली यूज अ टैरिफ बैरियर्स टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. The fourth is to liberalize tariffs and the non-tariff measures through a multilateral organizations. So as we discussed in the last class, जो trade barriers हमने tariff and non-tariff discuss किए थे, उनको reduce करने के लिए GATT was formed. In order to achieve these objectives, the agreement provided for first the multilateral trade negotiation, second the consultation, conciliation, and the settlement of dispute, and last is a waiver to be granted in the exceptional cases. Any doubt in the objectives of GATT? Okay, then we'll move forward. So next is what is the criticism of GATT? Since inception of the GATT, because we know that after GATT, WTO was formed. So there were some criticism, there were some drawbacks with the formation of GATT, because of which WTO was born.
Since the inception of the GATT, its rules were hardly applied to the agriculture, which was considered as a special case. अब सोचो GATT के इंसेप्शन में उन्होंने जो ट्रेड पॉलिसीज बनाई उसने उन्होंने मेन सेक्टर को ही कंसिडर नहीं किया, विच इज द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ GATT. Second, developed countries formulated the new trade restrictions in the form of voluntary export restraints, market disruption, etc., which were outside the rule of GATT. ठीक है, तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गैट उन्होंने एक लूप होल फाइंड किया एंड दे फॉर्मुलेटेड द न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स, जिस जो गैट की कवरेज में नहीं आते थे. Since the GATT rules on subsidies were not explicit, its subsidy increases use served as another limitation of the GATT. Because GATT के जो rules थे, they were not explicit. मतलब वो एक क्लियरली स्टेट नहीं करते थे व्हाट आर द ट्रेड पॉलिसीज जिसकी वजह से लोग उसका बेनिफिट ले रहे थे. The contracting parties were allowed protection in case of urgency, such as a subsidized import or the severe balance of payment difficulties. According to the safeguard rule under Article 19 of the GATT, however, these temporary constraints have become permanent characteristics of the world trade system. अब GATT के अंडर कोई किसी को temporary rules दे रहा था, to temporary leverage दे रहा था, ठीक है, these are considered permanent characteristics under a trade system. ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में जो प्रोटेक्शंस थे जो कंट्री को प्रोवाइड हुए थे वो उन्होंने परमानेंटली अडॉप्ट कर लिए. The GATT rule in the Article 19, which permitted the formation of custom unions and the free trade areas, had been distorted and the misuse. This rule left many ambiguities which seriously weakened the GATT. Again, GATT के rules इतने ambiguous थे, इतने confusing थे, तो लोग उनके loopholes को find out करके they are taking a benefit of it. Countries are taking a benefit of it. It lacked any mechanism to get its rules implemented. The recommendation of the expert under the dispute settlement system had no legal binding of the parties to the dispute. अब last क्या था कि whatever their dispute settlement mechanism, उनकी जो भी वो judgment pass करते थे उसकी कोई legal binding ही नहीं होती थी. ठीक है, they are not binded by the law. तो अगर किसी को लीगल बाइंडिंग ही नहीं है, व्हाटएवर द जजमेंट यू आर पासिंग, तो कोई भी कंट्री उसको फॉलो नहीं करेगा. सो दैट इज द अनदर लूपहोल इन द GATT रूल्स. Then comes the WTO. WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between the nations. Its main purpose is to ensure the trade flow as smoothly and predictably and freely as possible. And this international body was established in 1995 as a successor of GATT, which was created after a World War II. ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि WTO कैसे आया था. तो WTO ने GATT को रिप्लेस किया था in 1995. जितनी भी उनके लूप होल्स थे उसको ओवरकम किया था WTO ने. What were the main objectives for WTO? First is a trade liberalization. One of the key objectives of the WTO is to substantially reduce tariffs and other barriers to trade in order to facilitate the free flow of goods and services across the border. Simple. WTO का मेन पर्पस क्या था एस्टैब्लिशमेंट का? टू रिड्यूस अ टैरिफ, जिसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्रीली फ्लो कर पाए बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है. सेकेंड इज अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन. WTO promotes the principle of non-discrimination, ensuring that all the member countries are treated equally and fairly in international trade. सेकेंड क्या था? क्योंकि WTO में सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, सो इट प्रमोटेड नॉन डिस्क्रिमिनेशन कि सारी कंट्री even it is a developed country or a developing country, सबको equal participation होगा, सबको fairly treat किया जाएगा. Third comes the predictability and the transparency. WTO seek to create a stable and a predictable trading environment by encouraging transparency in trade policy and practices among the member nations. WTO क्या प्रमोट करता है कि जो भी member nation की trade policy होगी वो transparent होनी चाहिए. ठीक है, उसमें कोई भी hidden fact नहीं होना चाहिए. Then fourth is a sustainable development. WTO recognizes the importance of sustainable development and aims to protect the environment while promoting economic growth and development. ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नाउ कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन द ESG डेवलपमेंट, दैट इज द एनवायरमेंटल, सोशल एंड द गवर्नेंस, कि जो भी कंट्री डेवलपमेंट कर रही है इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू देयर स्टेक होल्डर्स एंड दे शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स। मतलब उन्हें अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना है, इन विच दे आर एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री फॉर जहां से वो रिसोर्सेज रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज आर एस्टैब्लिश एंड दे आर जस्ट टेकिंग अवे द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। वो उनको कंट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है in terms of helping the society. Now comes the principle of the WTO. These are all same as a main objective. First is a non-discrimination. Second is free trade. Third is a predictability and transparency. And last is a fair competition. In non-discrimination, the WTO upholds the principle of most favored treatment, most favored nation treatment, and national treatment, ensuring that all the countries are treated equally. ठीक है, मोस्ट फेवर ट्रीटमेंट नहीं हमें फॉलो करना है, ठीक है, या फिर नेशनल ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करना है, सारी कंट्री को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, दैट द इंपोर्टेड गुड्स आर ट्रीटेड नो लेस फेवरली देन द डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, आप जो भी डोमेस्टिक गुड्स हैं और फॉरेन गुड्स हैं उसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। देन कम्स द फ्री ट्रेड। WTO encourages the free trade by prohibiting quantitative restrictions, reducing tariffs and non-tariff barriers, which allowing the gradual reduction for developing countries. अब WTO क्या प्रमोट करता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि उसने क्या किया, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करे, ठीक है, जिससे कि ट्रेड अनुराग, यू आर आस्किंग मैम, वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेड हो बिटवीन द कंट्रीज तो उसका डेटा WTO के पास जाता है। यस, दे गेट द रिपोर्ट ऑफ ऑल द डेटास between the countries, transactions done between the countries, while allowing the gradual reduction for developing countries. ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, जो भी ट्रेड बैरियर्स है उनको रिड्यूस किया WTO ने। देन कम्स द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हमने अभी डिस्कस किया था ट्रेड पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। Last is a fair competition. WTO seek to encourage open, fair, and undistorted competition by addressing issues such as dumping, subsidies, and anti-competitive practices. ठीक है, WTO क्या इंश्योर करता है कि there would be a fair competition between the market participants. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डंपिंग डिस्कस किया था। सो डंपिंग नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी डंपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए। अब सब्सिडीज दे सकते हैं बट इट शुड नॉट सच दैट कि आपका इंपोर्ट ही आना बंद हो गया, ठीक है। देन द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए नेशंस में। दैट वाज द मेन पर्पस विद व्हिच द WTO वाज एस्टैब्लिश्ड। देन कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ WTO। तीन स्टेप्स है WTO में। वन इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सेकंड इज द जनरल काउंसिल, एंड लास्ट द specialized council. Ministerial conference में क्या आता है? It is the highest decision making body of the WTO. It comprises member of all the nation. It meet at least once every 2 years to carry out the function of WTO and make the decision on a trade agreements. ठीक है, so सबसे upper category कौन है? Ministerial conference. Then comes the general council. General council oversees the day-to-day operations of the WTO and act as a dispute settlement body and the trade policy review body. It is composed of the representative from all the member nations and they meet regularly. मतलब मेन काम किसका है? जनरल काउंसिल का, जो डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस ओवरसी करेगी। देन कम्स द स्पेशलाइज्ड काउंसिल। WTO has a specialized council for trade in goods, services, intellectual property rights, as well as the various committees that carry out the specific functions related to the trade. अब specialist council क्या है? They are for the specified purpose only. As then its name suggests, they are only for the specific functions. Then comes the WTO, various WTO agreement. First is the trade in goods. WTO agreement covers trade in goods, including the GAT and GATT and agreement on agriculture, agreement of textile and the clothing. These are the agreement which are done by WTO. Trade in services, general agreement on trade and services establish the rules and principle for trade and services covering the sectors like financial, education and telecommunication. Then comes the intellectual property.
The agreement on trade related aspects of intellectual property rights is the minimum standard for the protection of intellectual property rights, including patent, trademarks, and copyright. Last is the dispute settlement. WTO has a robust dispute settlement system that allows the member nations to resolve trade dispute through consultation panels and appellate body. Any doubt till now? Okay. Am I too fast for you guys, or my pace is okay? Okay, it's okay. Now you are getting what I'm explaining, right? Okay. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है? व्हाट आर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कॉपीराइट्स हो गए, हमारे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, तो डब्ल्यूटीओ में इससे रिलेटेड भी अग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, वो क्या करता है, द अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट का क्या नाम है? सबसे पहले इट्स अ ट्रिप्स, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें क्या है, दे सेट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वो हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कॉपीराइट या हो सकता है, किसी ने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया हो, उसको पेटेंट कराना हो, तो जो डब्ल्यूटीओ है उसको उसको भी प्रोटेक्ट करता है। दे प्रोवाइड अ गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दैट आल्सो। अनुराग, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Okay, moving on. This is also we have discussed earlier. That is a dispute settlement in WTO. We'll quickly go through it now. First is the consultation. The first stage of the dispute settlement process involves the consultation between the parties to the dispute with the aim of reaching a mutually agreed solution. ठीक है, कंसल्टेशन में क्या है, जिन दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उन दोनों को बैठाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट आर देयर प्रॉब्लम एंड दे ट्राई टू रीच आउट एट अ सॉल्यूशन कि जिससे दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री करे। ठीक है, सेकेंड इज अ पैलन एंड एप्लेंट बॉडी. If the consultation fail, the dispute is adjudicated by a panel of experts, and if necessary, the appellant body which issues a final ruling. ठीक है, अगर कंसल्टेशन फेल हो जाती है तो क्या होता है, देन द पैनल इज फॉर्म्ड, पैनल डिसाइड करती है कि क्या रूलिंग होनी चाहिए. देन द इम्प्लीमेंटेशन, द लूजिंग पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द रूलिंग which may involve changing its state practices, policies, and providing compensation. Failure to comply can lead to authorized retaliation by the winning party. Any doubt in this? Just go through this slide. If you have any doubt, then ask me now. Abhishek, should I repeat this slide or I explain WT again?
ओके, देखो डिस्प्यूट सेटलिंग प्रोसेस में देयर आर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, देयर इज अ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में क्या है, अगर किसी भी दो कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू ट्रेड, तो वो क्या करेंगे, दोनों पार्टी को बिठाएंगे, ठीक है, दे विल डिस्कस इट, ठीक है। अगर वो क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए दे ट्राई टू फाइंड आउट अ सम कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, जो दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री करेगी, ठीक है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर उस सेटलमेंट में उनका कुछ नहीं होता है, देन इट मूव टू अ panel or the appellant body. If the consultation fail, the dispute is adjudicated by the panel of expert and if necessary, the appellant body which issue a final ruling. अब क्या करेंगे, दोनों पार्टी आपस में सेटल नहीं कर पा रही है, तो हम एक पैनल को बिठाएंगे, ठीक है, देन द पैनल विल डिसाइड कि क्या होना चाहिए, ठीक है। Now last step is the implementation. अब implementation में क्या है, whatever is the ruling of the panel, ठीक है, उसमें जो भी losing party होगी उसके जो भी उनको करना है, जो the compensation they have to provide, उसको implement करना है, ठीक है। The losing party is expected to implement the ruling which may involve changing its trade policy or providing compensation. Failure to comply can lead to authorized retaliation by the winning party. अगर वो ऐसा नहीं करती तो विनिंग पार्टी उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकती है। अभिषेक, नाउ इट इज क्लियर टू यू? यस अभिषेक, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? Okay, moving on. We'll discuss what are the benefits of WTO. First is a lower living cost. By reducing the trade barriers, WTO helps to lower the cost of imported goods and services, ultimately reducing the cost of living for consumers. अब हमने कल पढ़ा था, जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो ड्यूटीज होती है, उससे क्या होता है, इंपोर्टेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर ट्रेड बैरियर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, दैट विल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। सो क्या बेनिफिट हुआ, इट लोअर्स द लिविंग कॉस्ट। Second is the economic growth. Economic growth क्या है, WTO promotes economic growth by facilitating the international trade and investment, leading to the increased productivity and employment. इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हेल्प कर रहा है, अगर WTO मतलब बैरियर्स को कम कर देगा, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे कैन मूव इजीली बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। अगर ज्यादा, इससे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिवली अफेक्ट होगी। Next is a dispute resolution. WTO dispute settlement mechanism helps resolve trade dispute and reduce tension between the member nations, promoting a stable trading environment. ठीक है, WTO का डिस्प्यूट अभी हमने पढ़ा, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे वो लोग जो भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टू प्रमोट अ स्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। Then last is the developing country support. WTO provides special provisions and assistance to developing and the least developed countries, helping them to integrate into the global trading system. ठीक है, अब क्या WTO क्या करता है, हमने क्या डिस्कस करा था, नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो असिस्ट करता है डेवलपिंग एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है, एंड हेल्प देम कि वो सब जितने भी मेंबर नेशन है वो सबको साथ लेके चलता है एंड ट्राई देम टू इंटीग्रेट विद द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। एनी डाउट इन दिस? ओके, मूविंग ऑन, देन कम्स द क्रिटिसिज्म ऑफ WTO। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिमिटेशंस तो होते ही है, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसका, अनफेयर ट्रीटमेंट। Critics argue that WTO favor developed countries and the multinational corporations over the interest of developing nation and local industry. मतलब अब ऐसा मतलब प्रूफ तो नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि जो WTO है, इट फेवर्स
developed nations and the multinational corporations. ठीक है, हमने अभी पढ़ा था it should support the interest of developing nation, but it is doing the otherwise. वो developed countries को support कर रहा है. Then come the agriculture protectionism. WTO has criticized for failing to reduce high tariffs on the agriculture products, which adversely affects the farmers in the developing country. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि WTO ने जो हाई टैरिफ्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे उनको रिड्यूस नहीं करा है, जिसकी वजह से दे आर हाईली क्रिटिसाइज्ड. देन कम्स द एनवायरमेंटल कंसर्न. Some argue that WTO prioritizes economic growth over environmental protections and sustainable development. अब क्या हमने क्या डिस्कस किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि हमें अपने ESG फैक्टर्स पे भी फोकस करना है. बट WTO क्या फोकस करता है? इट जस्ट फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इग्नोर्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Then comes the lack of democracy. Critics claim that WTO decision-making process is undemocratic and biased towards the interest of wealthy nation. This is aligned with the first one, which is an unfair treatment. ठीक है, कि जिसमें वो डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा सपोर्ट करता है. Any doubt in this? Okay, then we'll move forward to IMF. IMF क्या है? IMF is an international monetary fund. It is an international organization that works to foster global monetary cooperation. My slide is visible to everyone, right? Okay. IMF क्या है? It is international organization that works to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth. अब IMF का क्या है? Comprehensive function है. उसको बहुत सारे काम करने होते हैं. First is a monetary cooperation, then उसको financial stability भी देखनी है पूरे वर्ल्ड की. ठीक है. Second, it facilitates international trade. It promotes high employment and a sustainable growth. ठीक है. It try to reduce poverty around the world. IMF कब establish हुआ था? In 1945. It is headquartered in Washington DC. ठीक है. Then we'll discuss what is the main function of establishing IMF. So first is an international monetary cooperation. The absence of monetary cooperation amongst the countries of the world was one of the major causes of the Second World War. Hence, the establishment of the international monetary cooperation was considered essential to prevent the outbreak of war in the future. ठीक है. क्यों establish किया IMF? World War II के बाद establish किया to have an international monetary corporation. ठीक है. Second point is to ensure stability in the foreign exchange rate. A fair amount of instability in foreign exchange rate had caused adverse impact on international trade. Hence, the IMF was established to eliminate its instability of foreign exchange. ठीक है. Next come the eliminate exchange control. ठीक है. The exchange control was resorted to by many countries to fix the exchange rate at a particular level. The international trade because of this was adversely affected. With a view to encourage a smooth flow of international trade, removable relaxation of these exchange controls were considered necessary. Any doubt in these three? Okay, then comes the to establish a system of multilateral trade and payment. Fifth is to promote international trade. Sixth is to help a member nations to achieve a balanced economic growth. ठीक है. IMF क्या करता है? It tries to help their member nation, particularly the developing and the developed countries, to achieve a balanced economic growth by helping them to increase their employment levels. Then comes there to eliminate or reduce the balance of payment disequilibrium. We have discussed in the last class what is the balance of payment disequilibrium. Do you remember? Guys, do you remember what is a BOP disequilibrium? Yesterday we have discussed this.
Please answer in your chat box. Yes, I am asking about the BOP disequilibrium. What is that? कब आता है BOP disequilibrium? कब अराइज हो जाता है? कल ही हमने डिस्कस किया ये. किसी को याद नहीं है? अच्छा, जिसको आता है वो अपना हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करती हूँ, देन यू कैन आंसर इट. रेज योर हैंड जिसको आता है BOP disequilibrium. किसी को नहीं आता? चलो दोबारा बता देती हूँ. जब भी हमारे एक्सपोर्ट आर मोर देन द इम्पोर्ट, या फिर हमारे रिसिप्ट्स आर मोर देन द पेमेंट, ये होता है डिसइक्विलिब्रियम. या फिर पेमेंट ज्यादा हो गया, रिसिप्ट्स कम होगी. इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी हमारे रिसिप्ट्स ज्यादा है एंड पेमेंट कम है, ठीक है, तब भी डिसइक्विलिब्रियम होता है. या फिर हमारे पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है. It's not about the saving and investment, it's about your payment and the receipts on international trade. कल पढ़ा था ना हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में. It's mainly related to the exports and import. कल हमने पढ़ा था ना, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है ना. तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, मेनली क्या हो रहा था, इट इज अ ट्रेड बिटवीन दी कंट्रीज. एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस थी मेनली. तो अगर हमारे सेविंग एंड पेमेंट्स में, हमारे पेमेंट एंड रिसिप्ट में डिफरेंस होता है, तो हमारा डिसइक्विलिब्रियम राइज होता है. ठीक है. चलो मूविंग फॉरवर्ड. IMF promote investment of capital in the underdeveloped countries. ठीक है. It works for the well-being of the underdeveloped countries. इसमें किसी को डाउट है? किसी भी ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है IMF के? Okay. Then comes the functions of IMF. Article of agreement confer on IMF the legal authority to oversee the economic circumstances of virtually every country to ensure that no member flouts the provision of the charter. ठीक है. IMF के पास legal authority है to सारी कंट्रीज को ओवरसी करने के लिए, जिससे कोई भी कंट्री चार्टर के प्रोविजंस को इन्वेड ना करे या फिर अनफॉलो ना करे. द IMF lends to member countries to provide a temporary respite, enable them to correct their BOP difficulties. IMF क्या प्रोवाइड करता है? मेंबर्स कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करता है. IMF works in close association with World Bank and other development partners, provides concessional loans to low-income member countries to help support these countries in their effort to eradicate poverty. ठीक है. These are the very simple functions. I don't think any further explanation is required. Moving on, IMF endorsement of a country policy serve as an important catalyst
for mobilizing resources from a bilateral and a multilateral lenders and donors. Then come fifth is the IMF serve as a forum for consultation and the collaboration by members on international monetary and financial matters. IMF work with multilateral institution to devise international rules that would facilitate the prevention and orderly resolution of the international economic problems. Then sixth is in case of need to supplement the existing reserve assets, IMF is authorized to issue international reserve assets, that is a SDR, special drawing rights. That is also the IMF unit of account for all the transaction with its member. IMF कैसे trade करता है? Through SDR trade करता है. IMF provide technical assistance training to help member countries design economic policies, improve economic management capabilities, which in turn can help reduce the risk of failure, policy failure, and country resilience to the economic shocks. IMF disseminate information through its numerous economic report and research studies, as well as a specialized statistical publication on member countries, areas relevant to its mandate and operation. Any doubt in these 8 functions of IMF? अभी तो तुम कुछ डाउट पूछते नहीं हो, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछती हूँ, फिर बोलते हो कुछ नहीं, मतलब याद ही नहीं होता तुम लोगों को, ऐसे कैसे पढ़ रहे हो? कल ही हमने बीओपी डिसइक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, फिर भी नहीं याद है? अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, I'll explain it again. IMF कैसे रेगुलेट करता है? IMF के पास लीगल अथॉरिटी है. It's not a G20 like, it's not like a G20. IMF एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी इसके मेंबर नेशंस हैं उनको इसको फॉलो करना ही है. व्हाट आर द रेगुलेशन दे आर लेइंग डाउन, उनको फॉलो करना ही है. किसी को और डाउट है फंक्शंस में? इट्स टेक डिसीजन थ्रू इट्स, या राइट, थ्रू अ वोटिंग डे. उनका जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर नेशंस के, ठीक है, उसमें वो डिसीजन मेकिंग होती है. ठीक है, मूविंग ऑन, विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग IMF. IMF ने क्या किया? एक मॉनेटरी रिजर्व फंड स्टैब्लिश किया, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको फंड प्रोवाइड कर देता है वो, ठीक है. देन कम्स द सेटिंग ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट सिस्टम. इट इम्प्रूवमेंट इन द शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम इन POP, ठीक है, क्योंकि वो फंड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग कर सकता है कंट्रीज को, तो it can cause an improvement in short-term disequilibrium in balance of payment, stability in foreign exchange rate, check in the competitive currency devaluation, no interference in domestic economic affairs. Then last is a gain on gold standard. Any doubt in this? SOL की बुक में ये पॉइंट्स कवर नहीं है, therefore I'll share my presentation with you guys. ओके, गेन ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि अर्लियर क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो होता था, ऑल दी करेंसीज आर पेग्ड अगेंस्ट द गोल्ड, ठीक है. सो दैट दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द गोल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट व्हिच वाज फॉलोड अर्लियर. सो द
IMF provide gain over the gold standard क्योंकि वो क्या करता है, this system they provide a system which is more flexible and less expensive than the old gold standard. Any other doubt, anyone? No, I can create a WhatsApp group. Any doubt you have, you can mail it to me. गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं समझ आया? देखो अर्लियर क्या होता था, जब हम एक्सचेंज फाइनेंशियल सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता था, जो भी करेंसी है दे आर पेक्ड अगेंस्ट द गोल्ड, ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व होता था दे आर कंसिडर्ड एज अ रिच कंट्री, ठीक है। फिर क्या हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड एबॉलिश हो गया, और ये इन्होंने आईएमएफ, बाद में जब आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ तो आईएमएफ क्या करता है, इट्स प्रोवाइडर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब जिस रिजर्व्स की तो जरूरत नहीं है, गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत नहीं है कंट्रीज को, ठीक है, जो नॉर्मल करेंसी रिजर्व्स हैं, ठीक है, अगर किसी को लोन चाहिए किसी भी मेंबर नेशन को, तो आईएमएफ कैन प्रोवाइड दैट लोन थ्रू इट्स मॉनेटरी रिजर्व फंड. They are talking in that sense it provide a gain over the gold standard. Any doubt, anyone? आगे बढ़े? Should we move forward? Okay, moving on. First is the criticism of IMF include the first is that it has a limited scope. ठीक है, according to the rules of IMF, it deals only with those imbalances in the payment which arises out of current trade transaction. ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन की वजह से इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे बीओबी में, आईएमएफ से उससे ही डील करता है. इट डज नॉट डील विद द रीपेमेंट ऑफ वर्ल्ड लोन्स और विद द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है आईएमएफ की, लिमिटेड स्कोप. सेकेंड इज द फिक्सेशन ऑफ अनसाइंटिफिक quotas. An important criticism of the fund is that quotas of various member countries have not been fixed, keeping in mind the economic and the political interest of USA and UK. The reason why the fund has been continuously dominated by these two countries since its origin. ठीक है, fixation of unscientific quotas में क्या है कि two nations are dominating it and they're not letting it to fix their quotas or the exchange rate. Then comes the discriminatory treatment. Another criticism is that the fund discriminate in favor of the certain countries, like we have discussed in the case of WTO. In its they discriminate with the certain countries in their day-to-day activities. It gives special concession to the Western countries while neglecting the genuine interest of the backward and the underdeveloped countries. ठीक है, सेम डब्ल्यूटीओ का केस था कि वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करता है टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, fourth is the inability to remove exchange control. The fund has not been able to succeed in persuading the member countries to eliminate the exchange controls and other restrictions on the foreign trade. ठीक है, मतलब IMF is not able to convince the country to reduce their trade barriers. Then comes the no provision for the automatic revaluation of the currency. A glaring defect of the fund is that there is no provision in it for the automatic appreciation or revaluation of the country currency when that currency continuously enjoys a chronic favorable BOP, as in the case of USA. Then comes a no solution to the liquidity problem. ठीक है, it provides no solution to the liquidity problem. Then comes there is no elimination of multiple exchange rate between the currencies. The eighth is inadequate representation to developing countries. ठीक है, ninth is provision of inadequate resources to the developing countries. ठीक है, last is the erosion of sovereignty of poor nations. Yeah, जो ये 6 point है, it is no solution to the liquidity problem.
Any doubt in this? Any point when I'll discuss it? Okay, 10th point, which is the erosion of sovereignty of poor nations. ठीक है? क्या है? There is a criticism that the economic and the financial policy which are pursued by the IMF are interfering with the sovereignty of the poor borrowing countries. It is an increasing trend towards their conditionality in lending programs of the IMF, and as a consequence, political inconvenience adjustment programs that are the prerogative for these countries were being forced upon on the helpless borrowing countries. क्या कर रहा है IMF? क्या करता है? They make some regulation, ठीक है? और जो पुअर कंट्रीज होती है और जो पुअर बोरोइंग कंट्रीज हैं जिन्होंने उनसे लोन भी लिया हुआ है, ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन दे आर मेकिंग, दे हैव टू फॉलो इट, जिससे क्या हो रहा है, पुअर नेशंस आर अनेबल टू मेंटेन देयर सॉवरेनिटी. Abhishek, now you got it? Next, any other doubt, anyone? Or we'll move to our next topic. Any doubt, anyone? Ninth, provision of inadequate resources to developing countries. Like we have discussed also earlier also, कि क्या होता है, there is a discrimination between the developed and developing countries. So same उससे ही ये relate करता है criticism कि they are not providing adequate resources to the developing countries, क्योंकि they are doing a discriminatory treatment between the developed and the developing countries. Okay, moving on, then we'll come to a World Bank. World Bank क्या है? World Bank is a family of 5 international organizations that work to promote economic development, reduces poverty around the world. The most prominent institution within the group is the International Bank for Reconstruction and Development, commonly known as the World Bank. ठीक है, वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या था बनाने का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, World Bank is to facilitate the investment of capital for the productive purposes, supply investment capital to the developing countries, encourage long-term international investment, and help raise productivity and living standards in the member nation. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था वर्ल्ड बैंक को बनाने का? कि जो कैपिटल है वो प्रोडक्टिव यूसेज में इन्वेस्ट होगी. ठीक है, then comes the supply of investment to capital to the developing nation to have a long-term international investments to encourage it and to raise the productivity and the living standards of the member nations. ठीक है, IMF, World Bank provide long-term loans, technical assistance, advisory services to the developing countries for the various development projects such as infrastructure, education and healthcare. क्या करता है? वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है और या फिर एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग नेशंस. वर्ल्ड बैंक कंडक्ट रिसर्च एंड शेयर नॉलेज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. ठीक है, helping countries to develop the effective policies and strategies for the sustainable growth. ठीक है, और क्या काम करता है? They have their research wing जो continuously work करता है on different sections of the society, जो they formulate वो research करते हैं on the social and economic issues and उसके basis पे वो decide करते हैं what could be the possible या फिर effective policies हो सकती हैं for the sustainable growth. Then last one in the environmental factors or environmental focus. In recent year, World Bank has placed a strong emphasis on environmental sustainability and green growth, supporting projects that promote renewable energy and address climate change. ठीक है,
सेम हम ये सब में डिस्कस कर रहे हैं कि नाउ दे आर मूविंग ऑन टू द सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। ये हमें टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? Any doubt, anyone? Okay, then we'll move forward. So now we'll discuss, we have already discussed the objective of World Bank. We are now discussing it in detail. First is to help in the reconstruction and the development of member countries by facilitating the investment of capital for their productive use purpose, including restoration and the reconstruction of the economies devastated by the war. तो क्या मेन काम है? सबसे पहला, for the reconstruction and the development of the member countries. Second is to supply investment capital to the developing countries in order to encourage them to develop productive resources. ठीक है? Second क्या है? To provide capital to the developing countries. Third is to facilitate private foreign investments. ठीक है? To help करता है किसमें? Foreign investments में. ठीक है? Second is to supplement private foreign investment by direct loan out of its own capital for productive purposes. ठीक है? सब वो लोन भी प्रोवाइड करता है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है, which could be used for the productive purposes. Then to encourage long-term international investments in order to help member countries maintain the BOP equilibrium and promote the growth of international trade. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को भी इनकरेज करता है, ठीक है, to help in raising productivity, standard of living and the conditions of labor in the member countries. Any doubt in these 6 objectives of the World Bank? Okay, then we'll move forward. Then comes the functions of World Bank. तो पहला, जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो वही उसके मेन फंक्शंस होंगे, ठीक है। सो हम क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं. फर्स्ट इज इट ऑफर्स ग्रांट्स, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट्स एंड लो इंटरेस्ट लोन्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, क्या कर रहा है? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था, इट प्रोवाइड फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज. तो क्या करता है? कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करता है? इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रांट्स, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट्स और द लो इंटरेस्ट लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स. Second, it offers long-term loans and assistance to the developing countries. These funds support a wide range of investments across all the sectors, including education, energy, trade, and urban development. Banks also facilitate regular interaction among the donors and conduct studies on economic issues and social service system. अभी हमने डिस्कस किया था कि वो रिसर्च भी करते हैं. They have their research wing जिससे वो एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज को एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इट. ठीक है, वो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं उसके लिए. Then the World Bank either directly or through guarantees advances loan to the member countries intended for a certain specific reconstruction in the development project. Again finance wala point hai ye bhi. Fifth is intended for a middle development and provide them with the best global expertise so they can grow and overcome challenges. ठीक है. Sixth is to, in addition to the loan, IRBH, which is the other name of the World Bank, it is an international bank for reconstruction development, provide advisory services, risk management product, technical support at each stages to the low and middle income countries. It promotes environmental sustainability and green growth. Its member sponsor and participate in conferences and other events that tackle world and development challenges. Over the past decades, world is
involved in various projects that focus on social development and inclusion, private business development, and the improved healthcare and access to education. Any doubt in these functions of the World Bank? Anyone has any doubt? Okay, then we'll move forward. Then comes the criticism of World Bank. First, that it is highly inadequate shares of developing countries in the bank capital. ठीक है. Second is the inadequate. First को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. The share of developing countries in the capital resources of the World Bank was far from adequate. Since the voting rights of a country depend on the contribution of the countries to the capital of the bank, the total voting strength of the developing countries was far less than the developed countries. Again, यहाँ पे भी discrimination है. Second is the inadequate financial aid. Inadequate matlab they don't provide a proper financial aid which is required. Then comes the discriminatory treatment. Fourth is high interest and commission charges. Fifth is insist on repaying capacity. Sixth is loan for the specific projects only. उन्होंने बोला अपने प्रोजेक्ट्स डिसाइड करे हुए हैं कि किस किस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. Loans for the agriculture and elite occupations. Another criticism of the World Bank has been that it extended loan to the developing countries mostly for the agriculture and elite occupation than for a heavy and basic industries. Okay. Ninth is domination by the Western countries, and 10th is no respect for the sovereignty of the borrowing countries. Same point जो हमने IMF में भी discuss किया था. Any doubt in this? Any doubt, anyone? Just go through it for a second, then we'll move forward. If you have any doubt, you can ask me right now. Okay, Anurag asked me why they discriminate. Maybe because of the developed countries provide them more funds, they provide them more capital. Any other doubt, anyone? Because as per rule, they have to be neutral. But we can't say because they don't do it on paper, but their decisions are mostly tilted towards their developed countries. Any other doubt, anyone? Okay, then we'll move forward to our fourth unit.
which is the international for financial market. In this we'll first cover the exchange rate system. ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कहाँ से कहाँ तक एक्सचेंज रेट सिस्टम इवेल्युएट हुआ है. ठीक है, the economic landscape had gone through a significant changes, leading to a shift from the adjustable peg system to the floating rate system in the exchange rate regime. This is what I am talking about. Central bank played a crucial role. Anurag, what is you asking? Where we can take this problem if they discriminate? You can only discuss with them only whenever they have a meeting member nations. Okay. Then we'll move forward. Central bank played a crucial role in foreign exchange market during this period, helping to stabilize the prices of their currency against other. This led to the development of the alternative exchange system. When a country consistently faced the BOP issues over the extended period, it either restored to change in exchange rate, then which is a change in exchange rate means valuation and revaluation of the currency, or change in the currency exchange system. ठीक है, तो एक्सचेंज सिस्टम की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या पहले एक्सचेंज सिस्टम था एंड कैसे कैसे वो इवॉल्व होके अब फ्लोटिंग रेट सिस्टम पे आए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था. ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम डज नॉट इम्प्लाई एन अनचेंजिंग एक्सचेंज रेट. Instead, it is a system where exchange rates are allowed to fluctuate within a narrow band, with both limit fixed but not immutable. ठीक है, एक्सचेंज रेट फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है कि ये नहीं है कि हमने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया कि $1 इक्वल्स टू 1 रुपीज, ऐसा नहीं है. वो वी हैव डिसाइडेड अ बैंड कि 1 to 10 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है. ठीक है, the fixed exchange rate system was established as a result of Bretton Woods Agreement in 1994. The US dollar gained the importance as a reserve currency. Reserve currency का मतलब है all the currency are pegged against dollar. The market exchange rate was required to be maintained within 1% around the par value. ठीक है, central bank were obliged to intervene whenever a market rate pushed beyond the band. Any doubt in this? Okay, I'll complete it first, then I'll ask your doubts. The fixed exchange rate system was established through the Bretton Woods Agreement in 1944 with the US dollar as a reserve currency. Exchange rate were allowed to fluctuate with a band of 1% around the par value, and the central bank need to intervene whenever they are pushed beyond the band value. Now, any doubt in this? Okay, then we'll move forward to the Smithsonian Agreement, the Snake in the Tunnel Agreement. In the response to the Smithsonian Agreement, European community introduced Snake in the Tunnel exchange system. Under this agreement, the value of the member currencies were held within a 2.25% trading band, plus minus 1.25% with respect to each other. They were allowed to fluctuate jointly within a band of 4.5% with respect to the dollar. ठीक है, इसमें क्या करा उन्होंने बैंड ही डिसाइड कर दिया कि 4.5% के बैंड में वो फ्लक्चुएट कर सकती है. दिस वाज अ फ्लोट विद इन अ फ्लोट सिस्टम with the European currency forming a snake within the border tunnel of the fluctuation against the dollar. ठीक है, अब इसमें टनल है, टनल रिप्रेजेंटेड द 4.5% बैंड विद इन विच द यूरोपियन करेंसी वर अलाउड टू कलेक्टिवली फ्लक्चुएट फ्लोट अगेंस्ट द यूएस डॉलर. ठीक है, एक इन्होंने ब्रॉडर बैंड डिसाइड कर दिया 4.5% का. फिर आता है हमारा स्नेक. स्नेक में क्या है, स्नेक वाज द बैंड ऑफ 2.5% बैंड विद इन विच द यूरोपियन करेंसी वाज अलाउड टू फ्लक्चुएट विद ईच अदर. ठीक है, then come a worm. Belgium and the Netherlands agreed to maintain a narrow 1% band against each other, forming a worm within a snake.
तो एक आउटर बैंड है विच इज टर्नल 4.5% का, फिर उससे छोटा बैंड है 2.5% का, देन उससे भी छोटा बैंड है ऑफ 1%. ठीक है, दैट इज द स्नेक इन द टर्नल अग्रीमेंट. Moving on to the floating exchange system, the collapse of Bretton Woods and the Smithsonian Agreement, coupled with the oil crisis in 1971, led to the industrialized country to adopt the flexible exchange rate system in 1971, which was officially approved in 1978. Under the system, exchange rates are determined by market forces. If there is an increase in demand for the foreign currency, its price will rises in terms of the domestic currency. अब फ्लोटिंग रेट सिस्टम में कर दिया उन्होंने, ये सब जो एक्सचेंज रेट है डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिए करेंसी के. ठीक है, अगर करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी इट प्राइस विल गो अप, रिजल्टिंग इन अगर डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी राइज हो रही है तो it will its percentage, its exchange rate in terms of the domestic currency will rise, resulting in the depreciation of the domestic currency and the appreciation of the foreign currency. ठीक है, any this to exchange rate system. Okay, moving on, then comes the crawling peg or the dirty plot. Crawling peg system is a combination of the advantages of the fixed exchange rate and the flexibility of the floating exchange rate. ये क्या है? It's a combination of both fixed and floating. Exchange rate is fixed but allowed to crawl in response to the market pressures and the economic conditions. मतलब वो धीरे धीरे rise होगा. ठीक है, it will respond to the market circumstances but on a slowly basis. It will crawl only. Currency experiencing devaluation pressures continue to devalue it in stages, while those experiencing devaluation pressures are subjected to the periodic revaluation. Monetary and the fiscal policies come into play to push the exchange rate within the target zone and when it moves up beyond the upper and the lower limit. Any doubt in this? Any doubt anyone in crawling peg system? Okay, then we'll move forward. Then comes the foreign exchange risk. Foreign exchange risk क्या होता है? It refers to the variability of the domestic currency value of assets, liability, income due to the unanticipated changes in exchange rate. Foreign exchange risk क्या है कि अगर तुम्हारा कोई भी exposure फॉरेन करेंसी में है, ठीक है, तो अगर फॉरेन करेंसी में तुम्हारा एक्सपोजर है तो एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस होगा इट विल अफेक्ट योर बुक्स. ठीक है, तुम्हारी एसेट्स हो गई, तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई, ऑपरेटिंग इनकम हो गई, व्हाटएवर इज इन फॉरेन करेंसी इट विल बी अफेक्टेड. It is the uncertainty of the value of organization assets, liability, and operating income brought about by unexpected changes in the exchange rate, not the unpredictability of the foreign exchange rate themselves. Fluctuation in the value of assets, liability, and operating income in terms of the domestic currency due to changes in exchange rate gives rise to the exchange rate risk. ठीक है? Any doubt in foreign exchange risk? क्या होता है foreign exchange risk? अनुराग crawling peg repeat करना है. ओके, देखो क्रॉलिंग पैग में क्या है कि तुम्हारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स भी है, फ्लोटिंग भी है. ठीक है, अब फिक्स और फ्लोटिंग कैसे है? अभी तुमने उसको एक रेट पे फिक्स कर दिया, ठीक है, बट तुमने उसको फ्लोटिंग भी रखा है कि ये टू दिस अमाउंट चेंज हो सकता है. ठीक है, इट विल क्रॉल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा कि जो भी डिमांड सप्लाई में चेंजेस आएंगे उसकी वजह से चेंज हो जाएगा. इट विल चेंज बट ग्रेजुअली इट विल चेंज. ठीक है, वो है हमारा क्रॉलिंग पैग. अनुराग, इट इज क्लियर नाउ?
Okay. We have already discussed the foreign exchange risk. Then comes the foreign exchange exposures. Foreign exchange exposure क्या है? Responsiveness of the real value of assets and liabilities operating income to unexpected changes in exchange rate in terms of the functional currency. ठीक है? Foreign exchange exposure क्या है? अगर मेरी कोई भी asset फॉरेन करेंसी में है, मेरी कोई भी लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी में है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो भी चेंज होगा इट विल अफेक्ट माय वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. The real value means the value of such assets and liability operating income adjusted for inflation in a country. The functional currency is considered as a primary currency in which the financial statement of a firm are published, which is generally the domestic currency of the country. Okay? Any doubt in this? Anurag, do you have any doubt? Okay. Achha, go through the slide, then ask me any doubt if you have. Unanticipated मतलब unpredictable changes. Any other doubt, Anurag? Okay, then we'll move forward. अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर तीन टाइप के होते हैं. वन इज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सेकंड इज अ ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड फोर्थ इज अ इकोनॉमिक एक्सपोजर. ठीक है, तो हम फर्स्ट एक्सपोजर डिस्कस करेंगे विच इज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कब होता है? व्हेन देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या मतलब है? मैंने किसी से डील करी कि तुम मुझे ये कोई भी एक प्रोडक्ट ए किसी फॉरेन करेंसी में दोगे, लाइक डॉलर में देना है, पे करना है. ठीक है, अभी डॉलर का रेट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी डॉलर का रेट है 70. ठीक है, या फिर 80. डॉलर का रेट है अभी 80. ठीक है, अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो रेट क्या था? 80. ठीक है, आई डिसाइडेड टू पे हिम 80 रुपीज पर डॉलर. ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया, दैट इज द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है 2 महीने बाद. ठीक है, that is with the age of that will be the that will be the time of performance of the contract. ठीक है, तो परफॉर्मेंस पे टाइम पे डॉलर का अमाउंट हो गया 85. ठीक है, तो अब मेरे को उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ 80 आई हैव टू पे हिम 85 रुपीज. ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. मेरे को 5 रुपीज का लॉस हुआ बिकॉज दोनों चीजों में टाइम था, बिकॉज देर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इफ द एक्सचेंज रेट मूव्स अनएक्सपेक्टेडली इट रिजल्ट्स इन द डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन लीडिंग टू द गेन ऑन लॉस दैट इन्वॉल्व डेफिनेट कैश मूवमेंट बिटवीन द पार्टीज. एनी डाउट इन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर?
Anyone has any doubt in transaction exposure? ओके, देन विल मूव टू अ ट्रांसलेशन एक्सपोजर. ठीक है, अब ट्रांसलेशन क्या होता है? इट्स अ अकाउंटिंग एक्सपोजर. इट अराइजेस व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फॉरेन सब्सिडी एंड एफिलिएट इन are translated into a domestic currency for the consolidation into the parent company's financial statement. With the movement in exchange rate, the value of these assets and liability changes when translated into a domestic currency. Translation exposure क्या है? अगर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करी है, ठीक है, और मैंने एक सब्सिडरी क्रिएट करी एक फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यूएस में मैंने एक सब्सिडरी स्टैब्लिश करी. ठीक है, अब वो मेरी सब्सिडी फर्म है. ठीक है, जब भी मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे साथ कंबाइन होगी टू फॉर्म अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अब उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो फॉरेन करेंसी में है, बिकॉज वो वहां पे ऑपरेट कर रही है. ठीक है, और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे कन्वर्ट करनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट करनी है, तो उसमें क्या आएगा? कौन सा मेन फैक्टर होगा? एक्सचेंज रेट का. ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग है तो मेरे लिए टफ हो जाएगा टू कंसोलिडेटेड. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन एक्सपोजर. Translation exposure, difference between the exposed assets and liability, gains and losses are in accounting in nature with no cash implications. इसमें कोई cash implications नहीं है, like there is a transaction exposure. इसमें सिर्फ conversion का दिक्कत है. ठीक है, any doubt in translation exposure? Any doubt in this? Okay, then we'll move to economic exposure. अब economic exposure क्या होता है? It focuses on the impact of changes in exchange rate on future cash flows, revenues, cost and profit of a firm. It comprises both the transaction and the operating exposure. While the transaction and translation exposure divide items on the balance sheet into those affected by the exchange rate changes, then those become variant. Operating exposure focuses on the impact of exchange rate changes on the future cash flows. ठीक है, economic exposure is an assessment of the effect of exchange rate on the present value of the future cash flows or a change in economic net worth of a company due to the exchange rate changes. अब economic exposure में मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ कि exchange rate का मेरे future cash flow पे क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, उस इफेक्ट को मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के काउंट करूंगी कि क्या इफेक्ट आ सकता है. व्हाट कुड बी द इकोनॉमिक एक्सपोजर ऑफ द चेंज इन एक्सचेंज रेट. इकोनॉमिक एक्सपोजर सबको है समझ? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन हैज एनी डाउट? अच्छा देखो श्रेया, इकोनॉमिक एक्सपोजर में अभी हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर किया और ट्रांसलेशन एक्सपोजर किया. ट्रांजैक्शन में क्या था? मेरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रही थी, ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज रेट. ट्रांसलेशन में क्या था? जब मैं किसी अपनी सब्सिडरी को कन्वर्ट कर रही थी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट कर रही थी, तब मैं एक्सचेंज रेट के इफेक्ट को एनकाउंटर कर रही थी. अब इकोनॉमिक एक्सपोजर में क्या है? मैं अपने एक्सचेंज रेट पे, अपने फ्यूचर कैश फ्लो पे एक्सचेंज रेट का इफेक्ट देख रही हूँ. ठीक है, किस पे? फ्यूचर कैश फ्लोज पे. ठीक है, और फ्यूचर कैश फ्लो पे इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा? जब मैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी कि आज की डेट में क्या इम्पैक्ट होगा अगर एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन होती है. श्रेया, नाउ इट इज क्लियर टू यू?
ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? हम करेंसी को ट्रेड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर. It is by far is the busiest and the most active currency market of financial market, with a turnover comfortably exceeding of the trading of bonds and equities. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं और एफएक्स मार्केट भी बोलते हैं. Most currencies are allowed by the central bank to float exchange rate between one currency and another can vary. ठीक है, हमने अभी देखा पढ़ा था कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी वर्सेस अनदर करेंसी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द इशूअर. ठीक है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होगी कंट्री की, उस पे उसकी करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है. इट क्रिएट्स अ रिस्क फॉर द कंपनी ऑपरेटिंग इंटरनेशनली. ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली कंपनी को क्यों थ्रेट होगा इसमें? क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट. ठीक है, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग रेवेन्यू सब एक्सचेंज रेट से अफेक्ट हो जाएगा. एनी डाउट इन अ बेसिक डिफाइन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? ओके, हम आगे बढ़ते हैं. देन अब हमारे आते हैं, एक होता है हमारा बिड प्राइस और एक होता है हमारा आस्क प्राइस फॉरेन एक्सचेंज में. ठीक है, देन होता है हमारे डायरेक्ट कोट्स होते हैं, स्पॉट कोट्स होते हैं, ठीक है, और क्रॉस कोट्स होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ कोटेशन. ठीक है, अ कोटेशन इज अ अमाउंट ऑफ करेंसी नेसेसरी टू बाय और सेल अ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी. कोटेशन क्या है? जैसे मैं बोलती हूँ $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी इज, सॉरी, $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज. ठीक है, तो ये क्या है? मेरी कोटेशन है कि मेरे को एक करेंसी को कितने सेल करना पड़ेगा टू बाय अनदर करेंसी. अगर मैं 85 रुपीज सेल करूंगी देन आई विल बी एबल टू बाय $1. ठीक है, ये होता है हमारा कोटेशन. अ कोटेशन इज द अमाउंट ऑफ करेंसी नेसेसरी टू बाय और सेल अ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी. When it is expressed in the currency term, it is a outright rate. ठीक है, करेंसी टर्म में मैंने कैसे लिखा? ₹/$45 है. इट इज अ आउटराइट रेट बिटवीन अ रुपी एंड अ डॉलर. एनी डाउट इन कोटेशन? ओके, अब मैं डिस्कस करती हूँ व्हाट इज अ बाय प्राइस. बाय प्राइस क्या होता है? बाय बिड प्राइस क्या होता है? इट इज अ बाइंग प्राइस. ठीक है, बाय इज कॉल्ड अ बिड वेयर द एक्सचेंजर इज रेडी टू बाय अ करेंसी फॉर विच अ कोट इज मेड. ठीक है, और आस्क प्राइस क्या होता है? इट इज अ सेलिंग प्राइस. साइल कोटेशन होता है कि अमाउंट ऑफ करेंसी विच इज आई एम रिक्वायर्ड टू सेल और बाय टू फॉर अनदर करेंसी. ठीक है, मेरे को कितनी अमाउंट ऑफ करेंसी चाहिए होगी जिससे मैं दूसरी करेंसी को बाय और सेल कर सकूं. ठीक है, जैसे मैंने आपको रुपये और डॉलर का एग्जांपल दिया. $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज. ठीक है, अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 85 रुपीज मेरे को सेल करने पड़ेंगे टू हैव $1. ठीक है, तो ये $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज क्या है? कोटेशन है. साहिल, now it is clear to you? ओके, अब मैं बात कर रही थी बिड प्राइस की. बिड प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस इज अ बाइंग प्राइस. ठीक है, कि कितना करेंसी में मैं कितने प्राइस पे बाय कर सकती हूँ. एंड आस्क प्राइस इज द सेलिंग प्राइस. एनी डाउट इन बिड एंड आस्क प्राइस? ओके, देन विल मूव टू अ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट रेट्स. डायरेक्ट रेट्स क्या होते हैं? अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, क्या कर रहे हैं डायरेक्ट रेट में? यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी. इट इज अ डायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट में क्या होता है? बिड इज लेस देन द आस्क रेट
Bid rate क्या होता है? It is a rate at which the buyer is ready to buy the currency, that is constant. And ask rate क्या होता है? It is a rate at which the seller is ready to sell the currency, that is constant. ठीक है. Indirect rate, it is a price of 1 unit of home currency in terms of a foreign currency. जैसे कि हम डॉलर का रेट पढ़ते हैं, इट इज अ इनडायरेक्ट कोट. ठीक है. सॉरी, डॉलर का रेट इज अ डायरेक्ट कोट, और यूएस के लिए इट इज अ इनडायरेक्ट कोट. एनी डाउट इन दिस? Anurag, I didn't get your question. How the currency will be strong? अगर करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी. ठीक है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेट सबको समझ आया? डायरेक्ट रेट क्या है? जब यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी. और इनडायरेक्ट रेट क्या है? इट इज अ प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी फॉर अ यूनिट ऑफ होम करेंसी फॉर अ फॉरेन करेंसी. Yes, like we have to increase the export to increase the demand of our currency. Any doubt in direct and indirect quote? Any doubt anyone in bid, ask, quotation, or a direct and indirect quote? Or I'll move forward. Yes, foreign country. Sahil, I didn't get your doubt. Are you asking किस foreign country की currency में होती है? अलग अलग कोट अवेलेबल होते हैं. जो भी फेमस करेंसीज होती हैं, लाइक यस, लाइक द अनुराग सेड, 5 जो मेजर करेंसीज हैं उनमें कोट अवेलेबल होते हैं. Any other doubt anyone? Okay, then we'll move forward. अब होते हैं हमारा स्पॉट ट्रांजैक्शन. स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होती है? इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय वन करेंसी अगेंस्ट द सेलिंग अनदर करेंसी एट अ अग्रीड प्राइस फॉर अ सेटलमेंट ऑन अ स्पॉट डेट. ठीक है. द एक्सचेंज रेट एट विच द ट्रांजैक्शन इज डन इज अ स्पॉट एक्सचेंज रेट. स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होती है? अभी हमने वो ट्रांजैक्शन करी है. ठीक है.
अब मतलब एक दिन में हमने वो ट्रांजैक्शन करनी है, नेक्स्ट डे हमने ट्रांजैक्शन कर दी है, दैट इज अ स्पॉट ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसमें देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू बाय वन करेंसी अगेंस्ट द सेलिंग बाय सेलिंग अनदर करेंसी ऑन अ अग्रीड प्राइस फॉर अ सेटलमेंट ऑन अ स्पॉट डेट। ठीक है, then comes the foreign exchange rate. Forward exchange rate क्या होता है? It is the exchange rate at which a bank agrees to exchange one currency for another currency at a future date when it is entered into a forward contract with the investor. फॉरवर्ड एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? मैं आज की डेट में ट्रांजैक्शन नहीं कर रही हूँ, आई एम डिसाइडिंग कि मैं फ्यूचर डेट पे जो एक्सचेंज रेट होगा उस पे ट्रांजैक्शन करूंगी। ठीक है, या तो आज से एक महीने बाद जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें मैं ट्रांजैक्शन करूंगी। ठीक है, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Any doubt in spot transactions and a forward transaction? ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसी व्हेन neither are the official currency of the country in which the exchange rate quote is given. जब हमें exchange rate quote given नहीं होता तब हम क्रॉस रेट निकालते हैं। कि जैसे मेरे पास रेट है रुपी एंड डॉलर का, ठीक है, और मेरे पास रेट है रुपी एंड कैनेडियन डॉलर का। ठीक है, और पर मेरे पास यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का साथ में रेट गिवन नहीं है, तो इन दैट केस हमें क्रॉस रेट निकालना पड़ता है। तो रुपी एंड डॉलर के रेट से एंड रुपी एंड कैनेडियन डॉलर के रेट से मैं कैनेडियन डॉलर एंड यूएसडी डॉलर का रेट फाइंड आउट करती हूँ। दैट इज अ क्रॉस रेट। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन क्रॉस रेट्स? Anyone has any doubt in cross rates? Okay, then we'll move forward. अब हम फॉरवर्ड इसी को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती है ऑलमोस्ट इमीडिएट डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आउटराइट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होती है बायर एंड सेलर एस्टैब्लिशेस द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, पेमेंट एंड डिलीवरी आर नॉट रिक्वायर्ड अंटिल द मैच्योरिटी। ठीक है, अब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? then forward exchange rate क्या होते हैं? It could be of 1 month, 3 months, 6 months, 9 months or 1 year. These are the forward exchange rates. Then comes the swap transactions. Swap transactions क्या होती हैं? It's a simultaneous purchase and sale of a given amount of foreign currency for two different values. So अब ट्रांजैक्शन टू वैल्यू डेट पे मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड किया 10 रुपीज का आज, ठीक है, और मैंने 10 रुपीज का ट्रेड किया 10 दिन बाद। ठीक है, सो अमाउंट इज सेम बट आई एम डूइंग एट द टू डिफरेंट वैल्यू डेट्स। Then comes the hedging. Hedging क्या है? It is a act of reducing exchange rate risk. अब इसमें दो चीजें होती हैं. It could be the outright rate quoted to the commercial customers. It could be a swap rate quoted in the interbank market as a discount or a premium. Hedging क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को exchange rate risk से protect कर रहे हैं. ठीक है, that is called hedging. Then comes the forward contract. हमने forward contract discuss कर लिया already. An agreement between a bank and a customer to deliver a specified amount of currency against another currency at a specified future date at a specified exchange rate. ठीक है, मतलब अभी मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर रही हूँ, आई एम डिसाइडिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फ्यूचर डेट। ठीक है, बट मैंने अमाउंट ऑफ करेंसी उसमें स्पेसिफाई कर दिया है। Then comes the future. Futures जो होते हैं it is similar to forward. ठीक है, बट क्या डिफरेंस होता है? दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज रेट। ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस रिक्वायर द मार्जिन टू बी डिपॉजिटेड क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड है। If a loss is taken on a contract, the amount is debited from the margin after the close of trading. अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉस होता है, it could be recovered from your margin. In other words, futures are cash settles and no underlying instruments or the principals are exchanged.
ठीक है. Secondly, all contract specifications such as expiration time, face amount, margins are determined by exchange instead of the individual trading party. Like in forward में क्या होता है, individual trading party responsible होती है to decide their terms on expiration, face amount, margins. ठीक है. But futures में क्या होता है, it all will be decided by exchange rate, exchange. This is the difference between the future and forward. Size of the contract future में क्या होता है, these are standardized for the given currency. ठीक है, क्योंकि exchange traded है. Outright futures में क्या होता है, it depends on the individual needs of the client, क्योंकि ये OTC product है. ठीक है, over the counter product है. Second is the location and the trade activity at the stock exchange or at a given location actively traded in a organized market. ठीक है, क्योंकि exchange rate पे trade हो रहा है. अब फॉरवर्ड में क्या है, these are through mainly through the agents और with the help of telecommunication. ड्यूरेशन क्या होती है, स्टैंडर्डाइज होती है ऑलमोस्ट अ ईयर. ठीक है, और आउट फॉरवर्ड में डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द टू पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन पर डिपेंड करता है. दोनों के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है. इंश्योरेंस दोनों एंड सिक्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस इंस्ट्रूमेंट. इंश्योरेंस एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड हाई सिक्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस. इंश्योरेंस क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, इट इज अ ऑफिशियल थिंग नाउ, तो ये इसमें इंश्योरेंस ज्यादा है. बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो इंश्योरेंस, बिकॉज दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री करके एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है. Then comes the trade regulation. Regulated for futures are regulated by stock exchange rules, and outright future contracts are regulation not explicitly determined. Any doubt in future and forward contracts? Okay, then we'll move forward to the options. अब हमने फ्यूचर पढ़ लिया, हमने फॉरवर्ड पढ़ लिया. अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, विच इज अ ऑप्शन. हमने स्वैप्स भी पढ़ लिया. ठीक है, अब ऑप्शंस क्या होते हैं. ऑप्शन ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय or sell a standardized amount of foreign currency that is traded at a fixed price at a particular time or until a particular time in the future. ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन का मतलब ही अगर देखें हम तो ऑप्शन है मेरे पास, कि मेरे पास राइट है कि मैं इस फॉरेन करेंसी को फ्यूचर में जाके बाय या सेल कर सकती हूँ. ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें अमाउंट डिसाइडेड होगा, इसमें डेट डिसाइडेड होगी. ठीक है, और किस कब मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करना है वो भी डिसाइड होगा. ठीक है, बट फ्यूचर में डेट आएगी, इट इज माई राइट बट नॉट दी ऑब्लिगेशन. मेरी मर्जी होगी कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है. ठीक है, तो ऑप्शन कैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेरे को राइट दिया जाता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ फॉरेन करेंसी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एंड अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर. एनी डाउट इन द डिफाइन ऑफ ऑप्शन? ओके, अब ऑप्शन जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं. इट कुड बी अ कॉल ऑप्शन और द पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन में क्या होता है, इट गिव्स यू अ राइट टू बाय. ठीक है, पुट ऑप्शन क्या है, राइट टू सेल. ठीक है, राइट टू बाय. राइट टू बाय का मतलब है कि मेरे को फ्यूचर में जाके अगर कोई करेंसी खरीदनी है, ठीक है, अगर खरीदनी है देन तो मैं क्या करूंगी, कॉल ऑप्शन बाय करूंगी, अगर मेरे को वो करेंसी फ्यूचर में जाके बाय करने की जरूरत होगी. ठीक है, पुट ऑप्शन क्या है कि मेरे को अगर वो फ्यूचर में जाके सेल करनी है. ठीक है, देन कम्स द डिफरेंट थ्री प्राइसेस. देयर इज अ एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, जब जाके वो एग्जीक्यूट होगा किस पे. ठीक है, देन कम्स द कॉस्ट एंड प्राइस वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एंड द अंडरलाइन करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट. सारी ट्रांजैक्शन किस पे होती है, मेरे स्पॉट एक्सचेंज रेट पे डिसाइड होती है कि फ्यूचर में जाके मेरी क्या वैल्यू होगी. एनी डाउट इन ऑप्शंस? एनी डाउट एनीवन?
अच्छा, यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं? यूरोपियन ऑप्शंस आर दोज व्हिच कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एक्सपायरेशन डेट। जो भी मेरी एक्सपायरेशन डेट डिसाइड होगी उस पे जब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। एंड अमेरिकन ऑप्शंस आर दोज व्हिच कैन बी एक्सरसाइज बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। ठीक है। देन डिफाइन पे आ जाते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन इज एन कॉन्ट्रैक्ट विच स्पेसिफाइज द प्राइस एट विच एन अमाउंट ऑफ करेंसी कैन बी ब्रॉट एट अ डेट इन अ फ्यूचर in the future is called a expiration, which is called a expiration date. ठीक है। Unlike forward and futures, the owner of an option does not have to go through with the transaction if or he doesn't want to wish through. अगर लो उसकी मर्जी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बायर की, तो उसकी मर्जी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा ही नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन उसको करने की जरूरत है ही नहीं अगर he doesn't wish to. Okay. Then we'll move to a type of options. अभी हमने discuss करा, one is the call option, other one is the put option. ठीक है। The buyer of the call option has a right but or not the obligation to buy the underlying asset at the strike price on or before the specified date in the future. However, the जो ऑप्शन का बायर है उसके पास तो राइट होता है, ठीक है, बट जो ऑप्शन का सेलर है उसके लिए वो ऑब्लिगेशन है। ठीक है। The seller has the obligation to sell the underlying price asset at the strike price on or before the specified date in the future if the holder of the option exercises his or her right. The buyer of the put option has the right but not the obligation to sell the underlying asset at the strike price on or before a specified date in the future. अब हम put option पे आ गए। put option में क्या है? right to sell but not the obligation। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड जो पुट ऑप्शन का जो सेलर है उसकी क्या है? ऑब्लिगेशन है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर इफ द होल्डर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइजेस हिज और हर राइट। एनी डाउट इन दिस? Okay. Then we'll come to the usage of option. When the economic agent expect the exchange rate trend of the particular currency could change drastically. ठीक है। अगर इकोनॉमिक एजेंट्स को लगता है कि एक्सचेंज रेट का ट्रेंड चेंज होने वाला है तो वो ऑप्शन बाय करके रखते हैं कि मैं अगर फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करूँ तो मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। व्हाट वुड बी द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करके रखते हैं। व्हेन द इकोनॉमिक एजेंट डज नॉट नो for a sure that a certain exchange rate flow will occur in the future, जब उनको श्योरिटी नहीं होती है कि ये वाला एक्सचेंज रेट मतलब ये वाला कैश फ्लो फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। अब ऑप्शंस की क्या एडवांटेजेस होती है? देयर इज अ फिक्स्ड ऑप्शन कॉस्ट, ठीक है, पर तुम्हारा जो गेन है वो अनलिमिटेड हो जाता है। ऑप्शन डू नॉट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड क्योंकि इट्स जस्ट अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ठीक है। मतलब एज पर योर एक्सपेक्टेशन अगर करेंसी की मूवमेंट हुई, ठीक है, देन यू विल एक्सरसाइज योर ऑप्शन। अगर करेंसी की मूवमेंट इन ऑपोजिट साइड हो गई विच इज इन योर फेवर तो आप ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करोगे। ठीक है। Then comes the what are the market participants in the foreign exchange market? ठीक है। सबसे पहले कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं? दे आर द बैंक क्लाइंट्स। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और बैंक खुद भी हो सकते हैं। ठीक है। ऑल दोस ग्रुप ऑफ द लीगल एंड द physical person that need foreign currency in doing their commercial or investment business। ठीक है। then the commercial banks वो भी क्योंकि foreign currency का buy and sell करते हैं on the behalf of their customers। then comes the brokers। broker क्या है? These are the agents that connects dealer interested in buying and selling the foreign exchange but does not become an active client in the transaction। brokers क्या कर रहे हैं? They just are helping for doing the transaction। they provide their client the bank and the information about the exchange rate at which the banks are willing to buy and sell a particular currency। Then comes the central bank। central bank क्या करता है? foreign exchange market intervention are meant to influence the foreign exchange of the domestic currency। क्योंकि अगर हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उससे मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक भी इट्स वन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। क्योंकि अगर हमारे रिजर्व्स का दे स्टार्ट बाइंग
द रिजर्व, देन दे बाइंग दैट करेंसी जिसका रिजर्व कम हो रहा होता है, ठीक है। देन कम्स द आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर क्या होते हैं? दे जस्ट वांट टू अर्न अ प्रॉफिट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, ठीक है। आर्बिट्राजर्स का मतलब क्या है? दे ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि अगर इंडियन मार्केट में मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, सेम प्रोडक्ट मैं किसी और मार्केट में जाके 12 रुपए पे बेच रही हूँ, ठीक है, मेरा कोई इसमें लॉस नहीं है, देयर इज जस्ट प्रॉफिट, ठीक है, मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, एंड वो भी रिस्कलेस प्रॉफिट होगा, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा कि इस मार्केट में यहाँ पे 10 रुपीज का प्राइस है, दूसरी मार्केट में 12 रुपीज का प्राइस है, देन ओनली आई बाय दैट प्रोडक्ट, और उसको वहां पे जाके मैंने सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो आर्बिट्राजर्स कौन होते हैं? दे अर्न अ प्रॉफिट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, ट्राई टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द साइमल्टेनियस एक्सचेंज रेट डिफरेंस इन द डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है, making use of an interest rate difference that exists in the national financial market of the two countries along with the transaction on a spot and forward exchange rate market at the same time. तो arbitrages क्या होते हैं? वो simultaneous transaction करते हैं to have a profit, to gain a profit. Then comes the hedgers and the speculators. Hedgers क्या होते हैं? वो बस अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं. Hedgers do not want to take the risk while participating in the market. They just want to ensure themselves against the exchange rate risk. ठीक है. Speculators क्या होते हैं? They trade on the possibilities of change in exchange rate. Speculators think they know what the future exchange rate of a particular currency will be, and they are willing to accept the exchange rate risk with the goal of making a profit. ठीक है. Then comes every foreign exchange market participant can behave either as a hedger or a speculator in the context of a particular transaction. Anyone got any doubt in arbitrager, hedger, and speculators? इनका काम क्या है? देखो, मेनली इनका काम क्या है? जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं या फिर जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हैं, मतलब मेनली जो एक्सपोर्टर्स हो गए, इंपोर्टर्स होते हैं, उनके ये काम की चीज है, क्योंकि उनको एक्सचेंज रेट रिस्क है ना, वही तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे एक्सचेंज रेट रिस्क से. एनी अदर डाउट एनीवन? एनी अदर डाउट एनीवन? सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए? स्पॉट का, फॉरवर्ड का, फ्यूचर का, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं कल पूछूंगी क्लास में, वरना. शॉर्ट रिवीजन करा दूं क्लास का? तो फिर वो तो फिर कल करेंगे रिवीजन, तो फिर अभी पहले तो क्लास खत्म कर ले. देखो, वैसे हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? हमने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी, आईएमएफ डिस्कस किया, वर्ल्ड बैंक डिस्कस किया, ठीक है, और क्या क्या डिस्कस किया? डब्ल्यूटीओ डिस्कस किया, कैट अग्रीमेंट डिस्कस किया, उनके ऑब्जेक्टिव, उनकी फंक्शनिंग एंड उनकी लिमिटेशन डिस्कस करी, ठीक है. उसके बाद हम किस पे आ गए? हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे आए. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने डिस्कस किया कि कैसे एक्सचेंज रेट सिस्टम इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पहले फिक्स था, फिर वो स्मिथसोनियन आया, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोटिंग आया एंड कॉलिंग सिस्टम आया, ठीक है. फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ एक्सपोजर डिस्कस करे, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है. अब उसके बाद हम आ गए हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में.
ठीक है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस करे, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट डिस्कस करे, कैसे कैसे रेट होते हैं, स्पॉट रेट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम मार्केट पार्टिसिपेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया सेंट्रल बैंक मार्केट पार्टिसिपेंट होता है, बैंक मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, आर्बिट्राजर्स होते हैं, दे आर स्पेकुलेटर्स एंड हेजर्स। अब बताओ, इस इन टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, या फिर कल की क्लास में सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। एजेंट्स आर द ब्रोकर, जो ब्रोकर्स होते हैं मार्केट में, ब्रोकर्स होते हैं ना, जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड में। तो खत्म ही हो गई वैसे हमारी आज की क्लास। अगर अब किसी को भी कोई भी डाउट है इन टॉपिक से लेके, प्लीज अभी पूछ लो। कर दूंगी, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी। बट पीपीटी में दे आर जस्ट द पॉइंटर्स। ठीक है, फॉर डिटेल यू हैव टू रेफर टू अ बुक। ठीक है, मैं 3 बुक के नाम बता रही हूँ। एक है मेघना अग्रवाल, डॉक्टर मेघना अग्रवाल की बुक है। ठीक है, एक सुमिति वर्मा की बुक है, एंड एक चार्ल्स एंड हिल है। तब बुक का नाम इंटरनेशनल बिजनेस है। अगर श्रेया आपके पास सुनील अगर कुमार की बुक है, डॉक्टर सुनील कुमार की, वो भी ठीक है, बट बस ये देख लेना कि तुम्हारे जो पॉइंटर्स हैं वो डिटेल्स में उसमें मेंशन हो, क्योंकि तुम एग्जाम में से पॉइंटर नहीं लिख के आओगे, एग्जाम में तुम्हें डिटेल में कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंटरनेशनल सेकंड बुक थी इंटरनेशनल बिजनेस बाय सुमति वर्मा। श्रेया आप लाइब्रेरी से बुक ले लेना, एंड दोनों को मैच कर लेना। देखो, सबसे पहले सारी बुक का नाम इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, फर्स्ट ऑथर मैंने बोला डॉक्टर मेघना अग्रवाल, सेकेंड ऑथर मैंने बोला डॉक्टर सुमति वर्मा, एंड थर्ड मैंने बोला देयर इज अ बुक बाय चार्ल्स एंड हिल। तुम्हारी उसमें सिलेबस में भी मेंशन है ये बुक, चार्ल्स हिल एंड जेन की बुक है।